जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले. I'm gonna get you settled. Give me 1 second. Sorry. Maybe. Yeah. So why don't you just go ahead? And I'm totally gone by this time. You're like, oh. You know what? That's not fair. सारी बातें भी आ रही हैं. डिफरेंट आइडिया लेके जाएंगे. हम लास्ट टाइम भी डाइस कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वी जस्ट वॉन वन प्राइज ऑफ 40,000 एंड टुडे वी आर अगेन जी नाज़रीन, मैं हूँ अंसार नुमादा सफ़ीर पाकिस्तान GOTV. इस वक्त मैं मिशिगन डेयरबोन में मौजूद हूँ और यहाँ पर डाइस का फंड रेजिंग डिनर मुनक्किद हो रहा है और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की माहिनाज फ़नकारा जनाब रूबीना अशरफ साहिबा मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पर डाइस के इस फंड रेजिंग डिनर में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई हैं. आइए रूबीना अशरफ साहिबा से डाइस से मुतालिक पूछते हैं जो डाइस की पाकिस्तान के अंदर जो खिदमात हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. डाइस से मेरी पहली मुलाकात इंट्रोडक्शन जो था वो लास्ट ईयर हुआ था जब मुझे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर मसूद और हामिद और डॉक्टर राना, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये कुछ लोग हैं जो मिशिगन में डिट्रॉइट में काम कर रहे हैं 25-30 सालों से 2-3 डिकेड्स और चाहते हैं पे बैक करना अपने मुल्क को, क्योंकि वो फील करते हैं कि वो जिस मकाम पे जिस जगह में हैं अब उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो शुक्र के तौर पे एक अपने मुल्क से अपनी एफिलिएशन शो करने के तौर पे किसी ना किसी तरीके से बताएं कि दे फील फॉर पाकिस्तान एंड दे स्टिल बिलोंग टू पाकिस्तान. तो बात बहुत प्यारी थी. ऐसे लगा कि अच्छा, हमें तो लगता है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है जब लोग चले जाते हैं अपने मुल्क से बाहर, काम करते हैं, ज़िंदगी का आधा हिस्सा एक हिस्सा गुजारते हैं, तो फिर शायद वो भूल जाते हैं. वो सिर्फ आते हैं रिश्तेदारों से मिलने एंड दैट्स अबाउट ऑल. सो आई फेल्ट अ पैंग कि हम शायद अपने मुल्क में रह के मुल्क के बारे में इतना नहीं सोचते जैसे ये लोग सोच रहे हैं. सो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज कि इनके साथ खड़े होना बनता है. So here I am standing with them today and I have vowed to stand with them forever. And I am looking at what they're doing, I am asking them questions and I am constantly trying to understand what they're doing. और मुझे जो जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो ब्रेन्स जो यहाँ पे लोगों के पास हैं, जो अपने अपने कामों में वो यकता लोग हैं,
वो जिस तरह से अपने दिमागों का इस्तेमाल करके और पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, उसका लेवल थोड़ा सा, वो बहुत हार्ट वार्मिंग है। वो ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आपको भी व्यूअर्स को भी पता चले कि किस तरह से लोग वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और किस टाइम लाइन में क्या चेंज लाना चाहते हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इनके साथ खड़ा होना चाहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में जो डाइस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आपका क्या पार्ट है? वहाँ पर आप किस तरह उनकी हेल्प करना चाहेंगी? आई एम जी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर डाइस, और कहीं भी जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ खड़ी होंगी, और अगर मुझे कुछ इससे ज़्यादा करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। And you do not spend except seeking the countenance of Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever you spend of good will be fully repaid to you and you will not be wrong. Sadaqallahu al-Azim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good evening and welcome to the first annual Dice Foundation fundraising dinner. We thank you all profusely for coming out this evening. We know that there's a lot of other things you can do. There's a lot of charity organizations out there. There's a lot of dinners. There's a lot of weddings. So we appreciate you taking the time out and coming. I am very impressed that you guys sold out the event for tonight. That's really remarkable for a first fundraiser for the organization. So I thank you all. I hope that you enjoyed the night so far. I'm going to promise you I'm going to try to keep things as entertaining, engaging, and as quick as possible. So with that said, I want to start off with one word, and this is where it gets serious. Innovation. What is innovation? Innovation is getting 450 Pakistani people to dress in the same color. It's not an easy task to do, guys. Let me tell you something. You guys did a great job. So, I'd like to start off with a quote, very simply. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Do you guys know who said that quote? Oh, wow, who said that? Raise your hand. My God, that's impressive. Okay, you're a winner in my book as well. Steve Jobs said that. And on the eve of the 10th anniversary of the iPhone, how many people in the audience have an iPhone in their hands right now? How many people? That's a lot. That's innovation. That changes the world. Every single person has an iPhone or a smartphone in their hands, and that's what we're going to be talking about tonight. Now, I've been involved with DICE. I'm a relatively new member. I've only been involved with DICE for about a year. But one of the most common questions I get asked, that a lot of you are asking as well, is, what is DICE? Is it a gambling addiction forum, or what's going on? But what is DICE? What do they do? What do you do? To put it very simply, there are many organizations out there right now doing incredible things. In fact, Uncle Mukhtar is here, Dr. Mukhtar Khan is here, who started the Hussein Foundation, is giving water to those who thirst for it. It's an amazing thing, an accomplishment that we should all be proud of. Human Development Foundation, yes, big round of applause. It is my very privilege to introduce a man that I find very inspiring. When I went to Pakistan last year, him and his wife took care of me like family. And I believe them to be family. And you know it immediately when you meet someone like that. Within just a few weeks, I felt a very warm attachment to them. I hope that you give them the same warmth and you welcome them here into our community, into our country, and into our state. You've heard of Dow Medical College? This gentleman is the founding vice chancellor of now what's called Dow University of Health Sciences. I don't want to speak about him too much because you will see what kind of man he is when he speaks. But I would like you to give a very, very warm, welcoming round of applause to Dr. Hamid Khan, Vice Chancellor of Dow University of Health Sciences. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. I'm so glad to be here, honored to be here this evening
and I'm thankful to the organizers and especially the chair of DICE Foundation, Dr. Khurshid, and the board of trustees. I'll be talking to you about 2-3 things, and the first thing is that common factor which has brought all of us together over here, and that is Pakistan. You all know that Pakistan was created after a very long struggle of our fathers, forefathers, and with a very difficult time, and after a very, very big bloodshed. Now we are talking about that Pakistan, which we say that the economy is poor, our socio-economic condition is poor, and to me that has led to the wave of terrorism in Pakistan. But still I would say that my experience over the past 13 years as founding Vice Chancellor, I would like to share that still going through that wave and that period of war, I must say, for the last 20 years, still Pakistanis and Pakistan is a very strong nation. It is a very hardy nation, very hardy nation. So many dilemmas we have seen, the tragedy of the army school, to various mosques, to various other terrorist attacks. But even we see that every morning people go to their offices, the things are working, and the country is moving on and on and on. So everything is not bad in Pakistan. There are so many good things people are doing in Pakistan. And when we study the history of Europe or America, consider Pakistan is a new nation. It's a very young, it's only 70 years old. Compared to these countries, they have long history. But all of them have gone and passed through very difficult timings. All of them. And so we are passing through, but Alhamdulillah, with the help of all of you, with the help of people living over there, we will come out of this difficult time. You get the proper environment, and you get the environment, you give the environment, and you see how the people and the things change. And here I would like to congratulate Dr. Khurshid to you that you are working so hard to bring in that environment to Pakistan, and that is the environment of innovation and entrepreneurship. We all believe that it is the thinking outside the box. And you must have known that circle where people are moving around, and whosoever takes a lift of 5 degrees outside, and he moves ahead. And this is what is innovation, that you have to think outside the box. Now when I met Dr. Khurshid, my wife Dr. Rana is also fully involved with me. So we have been having various exhibitions. We arranged 2 DICE Health exhibitions in Karachi, and then I went with them all over Pakistan to see what DICE is doing. And believe me, that these young students from universities and colleges, they have put forward so much excellent projects that, you know, it's difficult to believe, I must say. And out of this, like I would like to talk about one project, which is the production of material, dental material. And this young girl, you know, she needed only 300,000 Pakistani rupees to complete that research. There is no help for us out here. Use autopilot. And get off the ship. Aye, Captain. You're captain now, Mr. Kirk. Get your hands off of me. This is an act of war. That puts the CCB under my control. Now, if you let me do my job, I'm sure you have a fundraiser to attend. Let's go.
One of my biggest peeves is bald men in suits speaking for too long. So I'll make it brief and hopefully make some sense while I do that. The thing that I want to talk about the most, while I was driving here from the airport, one of the things that I was thinking about a lot was how to put this entire idea into a context. And I want us to do a little exercise. If we think about the entire population of New York, Los Angeles, San Francisco, Washington, D.C., Houston, Chicago, put them all together and think about the size of humanity that might present. Now put that entire population and put a face of a child on them. That is approximately the number of kids in Pakistan alone who do not have the opportunity to get education. Now let's take it one step further. Let's think about if one of those kids was our kid, who was being denied the idea, the opportunity, the culture, the support to do something in this world. And then I want you to think about how would that make you feel. That is the reality of Pakistan today. Something Ajmal said, which was that the future of Pakistanis or any country does not depend on the outside of people, which is true. The ability to change our culture, the ability to change our trajectory, the ability to change our future lies only with us, no one else. No one else has the responsibility to change our lives. So the time for complacency was never there, although we have become complacent. And we do not do what is important in our lives. Therefore, I would urge all of us to think of that tonight while we're thinking of DICE, and we're thinking of children, and we think of innovation, and give from the heart. And that is exactly why I did not bring a paper to read from, because I want to speak from my heart. And as an actor, it's much easier to have a script in front of me, so I thought, let's see what happens if I don't have one in front of me. Now, when we talk about innovation, what is innovation really? For me, innovation is a perfect balance of the knowledge that you've acquired, the training and the teachings that you have received from your teachers, from your parents, but it has another element to it, which is your own personal creativity, your own personal expression. And innovation becomes the perfect balance of all of those things. Why are we here? We talk about Steve Jobs, we talk about Oprah, we talk about Einstein. These people did not become who they were just because they wanted to pay their bills. They excelled in what they did because they loved what they did. They had a passion for it. It wasn't just to see the next day. And we have to encourage our youth and ourselves to find that passion in our lives. And then we need our society, our friends, our parents, our countries to help and support us in that endeavor. Because by doing so, we are not just ensuring economic prosperity for a nation. We're also ensuring a confidence that we are now giving to a child or a young person to live a life that they feel they were made to represent in this world. First of all, I would really like to thank our guest from Pakistan, Dr. Masood Hamid Saab, Dr. Rana Masood, Rubina Ashraf ji, and also Farhan Tahir Saab for taking time out of his busy schedule to come here. I would like to be very brief. I would like to talk about very specific things what DICE is doing. I only have 10-12 minutes. I was told not to take more than that. But before I get in there, I would like to share an interesting fact, which actually Tirmizi Saab forwarded me like several weeks ago.
thought I should include that in my presentation. So what you see on the screen is 4 garages. And these are the original initial headquarters of 4 US giants: Google, Apple, Amazon, and HP. 3 of them are actually just I saw in my own career in USA. Being established, starting from the garage, and let's see where they are today. So if you go to the next slide, look at the market capitalization of Apple right now. It's about $890 billion. It is about to touch $1 trillion. Look at Google, which just started only 10, 15 years ago. How much? 350 or something, something like that. So, and see how that market capital, this is the value which market is placing on these companies. Look at the money which is they making. Apple is making $45-something billion a year. Then out of that, on the average, they give 25% of the tax to United States government. United States government only last year got almost $500 billion of the taxes from the corporate sector. Total tax which they get, federal tax, is about $3.4 trillion. 20% comes from corporate taxes. And gentlemen, this is the power of innovation. Google is innovation. We all understand. We all know that. It's changing the world. There are 2 points which I wanted to make through these 2 slides. Number 1, for innovation, you don't need millions of dollars to come with a creative idea. You saw that they started from the garage. The other point which I wanted to make here is that this is how you generate wealth for the nation. There is a lot of hard work. These are the renderings, but this is not just a picture. We took hard points from Suzuki Mehran because they're part. So ladies and gentlemen, it is very, very important to understand this process. Now you must be wondering, where is Pakistan in this ranking? I could not find Pakistan in the previous survey. I looked at another survey and I was very, very worried and disappointed to see this ranking. Pakistan is 113 out of 127 or so countries. We are ranked very low, and we know all the reasons why we are there. So this is what DICE is set to change. And I can tell you right now, till I am alive, I'll keep pursuing this mission till I bring Pakistan into the top, at least top 10 nations of the world. Please give an even bigger round of applause to the reason we're all here today. Mr. Khurshid Qureshi, thank you very much. It was an amazing speech. And as I told you, he is a very passionate. Please give Ms. Rubina Ashraf a big round of applause and welcome her to the stage. Assalamu alaikum. So आज जो मैंने सीखा आज की शाम से और इन सब की बातें सुन के वो वही था जो मुझे पहले भी पता है, and something that I believe in, and that is when there's a will, there's a way. मुझे कल फरहाना है हमारे साथ यहाँ डाइस की टीम में, उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में कोई ऐसी बात बताइएगा जो कि लोगों को ना पता हो। मैं सोचा नहीं, मैंने अपने बारे में क्यों बात करनी है, हम डाइस की बात करेंगे। तो when I thought about it, मुझे लगा कि हाँ, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि वहाँ जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को शायद नहीं पता कि मैं अपनी फील्ड में कोई एक गब्बर सिंह हूँ। If you know what I mean.
the Iron Lady, Iron Man, I've set rules for myself. I apply them on myself, on the people around me, और थोड़ी सी एक दहशत है बिकॉज मैंने भी सुना है कि जब मैं किसी सेट पे जाने वाली होती हूँ तो लोग कहते हैं रुबीना आप आ रही हैं, रुबीना आप गाड़ी में बैठ गई हैं, रुबीना आप पहुँचने वाली हैं, जिसका मतलब होता है पानी जगह पे रखा जाए, जिसका मतलब होता है कि बाथरूम साफ़ हो जाए, जिसका मतलब होता है कि जगह साफ़ हो जाए, जिसका मतलब होता है कि कपड़े लटक जाएं, स्क्रिप्ट जो है वो जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि मैंने तय किया है कि अगर मुझे ये सब कुछ चाहिए है तो ये मुझे कोई और नहीं करके देगा, मुझे करना है अपने लिए और उन लोगों के लिए जो अपने लिए नहीं कर सकते. So what I want to tell from this is that I decided long ago that when there's a will, there's a way, and if I want something from life, तो मुझे ही वो करना है, कोई और मेरे लिए आगे नहीं करेगा. So मुश्किलें आई, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि बहुत बुरी रेपुटेशन बन गई है रुबीना, लोग बहुत घबरा रहे हैं तुमसे, लोग बहुत परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई इनको मत लो काम में, तो तुमको काम मिलना बंद हो जाएगा और तुम मुश्किल में पड़ जाओगी. आई थॉट दोस्त हैं, इनकी बात को समझने की ज़रूरत है. सो आई थॉट हार्ड अबाउट इट एंड आई सेड टू माई सेल्फ, मैं जो भी कर रही हूँ अगर मुझे ये ठीक लग रहा है और सही लग रहा है और सच्चा लग रहा है और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ तो आई एम श्योर अगर कोई और मेरे साथ खड़ा नहीं होगा तो अल्लाह है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. आज वही सारे लोग जो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम तो थोड़े दिनों में काम तुमको मिलना बंद हो जाएगा, वो कहते हैं अपने काम में लोगों को कि रुबीना होनी चाहिए थी यहाँ पे, वो होती ना तो तुम लोग ये नहीं करते जो इस वक्त तुम कर रहे हो. रुबीना होती ना तो ये मुझे गंदे ग्लास में पानी ना मिल रहा होता, रुबीना होती ना इस सेट तो बाथरूम साफ होता, काम तेज हो रहा होता. मोस्ट ऑफ द पीपल बुक मी बिकॉज व्हेन दे बुक मी वो पेस बनाते हैं काम की, उनको लगता है व्हाट आई एम ऑन द सेट एवरीथिंग वर्क्स फास्टर बेटर. तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, सिर्फ ये बता रही हूँ कि when there's a will, there's a way. And when you have the will, God stands with you. A man that nobody needs introduction for. He has created the Huston Foundation, which is giving water to those that need it all around Pakistan. He has done an incredible job. He's one of my favorite uncles in the entire world. And I would like you to give a warm round of applause to Dr. Mukhtar Khan, creator and founder of Huston Foundation. Foundation today. It's all about technology. It's about innovation. Hassan Foundation has reserved a patent. This is to help patients with obstructive sleep apnea. In US, the prevalence of obstructive sleep apnea is about 5%. With 307 million population, that turns into about 15 million people are suffering from obstructive sleep apnea. At the same token, in Pakistan, there are about 15% of the population, they are becoming overweight. To be more exact, it's about 14.some%. The current treatment for obstructive sleep apnea is CPAP, continuous positive airway pressure. Who wants to sleep with a mask on the face? It's very uncomfortable. 50% of the patients, they don't want to use it. So there is an idea about treating obstructive sleep apnea when CPAP doesn't work. It's going to be an electronic way of treating it. It's a very simple concept. In obstructive sleep apnea, for the non-physicians, when patient goes to sleep, their upper airway, it closes. The brain is sending impulses down to the inspiratory muscles to breathe.
And since the airway is closed, they can't breathe. Their oxygen drops, their carbon dioxide goes up, their nervous system gets stimulated, overstimulated, and in the long run, it can cause hypertension, it can cause heart failure, rhythm problems, daytime somnolence, accidents, all these things happen. It is an increased risk of cardiovascular disease. So the innovation is that you put a sensor. It has to be a flexible piezoelectric sensor that will go on the diaphragm. That will sense the contractility of the diaphragm. Since the problem is in the upper airways, a simple, already available device, a pacemaker, that will stimulate the 12th cranial nerve that supplies the muscle here. So when you stimulate that muscle, it will pull the tongue out of the airway, or it will open up the airways. So the important thing in this innovation is that you have to synchronize the diaphragm with the upper airways. So when the diaphragm is creating a negative pressure inside the chest, and the air is supposed to move down into the lungs, at the same time, the pacemaker will send an impulse to the muscle, the genioglossus muscle, and it will pull the tongue out of the airways, and the person will be able to breathe. I would like to take this a little bit further. That the piezoelectric sensor that will go on the diaphragm, A, it has to be wireless. B, it should be able to generate its own power, its own electricity. Since daytime, we are all awake, we really don't need the device. It should be able to generate enough electricity that it should even power the pacemaker itself. And that means the need for the battery will go away. It will be all generated from the diaphragm. Remember, just with a simple movement of one finger, you can literally light up 50 small LED lights. Diaphragm is a huge muscle, so it should be able to create its own energy. It should be able to store energy. Daytime, since we don't need the device, it should be able to power that up and make it work at night. 2091. Going once, going twice. 729-2091. Who got it? No. Oh my gosh. Isha Ahmed, this is my niece. You got the iPhone. Fantastic. Give her a round of applause. Ole, ole,
नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिजवी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान जो टी वी। इस वक्त मैं मिशिगन में डाइस फाउंडेशन के फंड रेजिंग डिनर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ कौंसल जनरल पाकिस्तान शिकागो जनाब फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि ख़ास तौर पर शिकागो से इस डिनर में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए थे। आइए डाइस फाउंडेशन से मुतालिक फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब से इनके ख़यालात सुनते हैं। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इवेंट को कवर किया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इनोवेशन के ऊपर बिलीव करती है और वो लिंकेजेस क्रिएट कर रही है बिटवीन इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। मैं पिछले 2 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हूँ और मेरा बड़ा कभी इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई हैव सीन इन पाकिस्तान ऑपरेटिंग इन द यूएस। इसमें ज़्यादातर वो इंजीनियर्स हैं जो यहाँ के जीएम फोर्ड में काम कर रहे हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज़ को लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान में इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स, मेडिकल साइंसेज, जिसमें बड़ी इनोवेशंस कर रहे हैं। और मुझे बड़ा कभी उम्मीद है कि जो सीड मनी और जो आइडियाज़ इनकरेज कर रही है डाइस, इससे पाकिस्तानी बच्चों को ग्लोबल मार्केट में ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिलेगा बल्कि दे विल बी एबल टू सेल देयर टेक्नोलॉजीज़ एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। तो इट्स अ ग्रेट इवेंट। इसमें आज यहाँ पे हमारे साथ थे फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी फरहान ताहिर, हु इज़ हॉलीवुड एक्टर, रुबीना अशरफ, और एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट था जिसमें बड़ी खूबसूरत बातें हुई कि किस तरह हमें, क्योंकि आपको मालूम है जैसे डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी ने कहा कि उनकी पूरी एजुकेशन के लिए उनको $100-200 ख़र्चा हुआ था जो पूरा हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया था। और इट्स अबाउट टाइम कि उनको वो चीज़ें पाकिस्तान में री इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी नई जनरेशन को पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे और टेक्नोलॉजिकली प्रमोट कर सकें। मैं मिशिगन में डाइस के पहले फंड रेजिंग डिनर में मौजूद हूँ, जो कि आज एक इंतहाई कामयाब फंड रेजिंग डिनर था और इस डिनर में पूरे अमेरिका भर से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। ख़ास तौर पर डॉक्टर मसूद हमीद ख़ान और रुबीना अशरफ जो कि पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा फरहान ताहिर जो कि बहुत ही मशहूर मोशन पिक्चर्स के स्टार हैं, वो भी यहाँ आज की तकरीब में शरीक थे। इस वक्त मेरे साथ डाइस फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे आज के फंड रेजिंग से मुतालिक पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला फंड रेजिंग इवेंट हमने यूनाइटेड स्टेट्स में किया है। डाइस फाउंडेशन वी स्टार्टेड आवर डाइस प्रोग्राम इन पाकिस्तान इन 2007। तो माशाल्लाह अब ये 11 साल हो गए पाकिस्तान में करते हुए। पाकिस्तान में हम एक लार्ज इनोवेशन इवेंट्स होते हैं हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो मेगा इनोवेशन इवेंट्स हैं, ऑटोमोटिव में भी होते हैं, हेल्थ में हैं। उसमें पूरे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ वो लेके आते हैं और फिर हम वहाँ इंडस्ट्री को भी बुलाते हैं। जो इंडस्ट्री के जो डिसीजन मेकर्स हैं, CEOs हैं, वो सारे आते हैं, उनका अच्छा काम देखते हैं, उसको फ़ंड भी करते हैं। हमने एक एक्टिविटी वहाँ डाइस शार्क के नाम से भी स्टार्ट की है जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ को इंडस्ट्री से फ़ंड करवाते हैं। हम एक नेशनल इनोवेशन बास्केट के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हम एक जो पाकिस्तान जितने भी स्ट्रेटिजिक एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, ऑटोमोटिव, हेल्थ, एनर्जी, वाटर, उसमें पाकिस्तान में क्या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या होने चाहिए, उस पर बॉटम्स अप काम कर रहे हैं ताकि वो जिसमें इंडस्ट्री के भी सजेशंस लें, उसमें एकेडेमिया के भी लें, गवर्नमेंट के भी सजेशंस लें और एक पूरा रोड मैप प्लानिंग कमीशन को दें, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को दें। इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान में तमाम जो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडस्ट्री है, चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश काउंसिल, सबसे बहुत सपोर्ट मिलती है इंशाल्लाह। तो हमारा फंडिंग मॉडल ही ऐसा है कि हमारे सारे इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान से फ़ंड होते हैं। यहाँ हमने फ़ंड रेजिंग इवेंट जो मुनक्किद किया था उसका ये रीज़न था कि हम अब जो हमारी इनोवेशंस आती हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। तो बाज़ औक़ात उनको इस फॉर्म में लाना पड़ता है कि वो इंडस्ट्री के लिए अट्रैक्टिव बने। तो वो उस कॉन्सेप्ट को जो है इस कमर्शियल रेडी बनाने के लिए जो हमें फ़ंड्स चाहिए होते हैं उसके लिए हमने यहाँ फ़ंड रेजिंग की है। मैं मिशिगन में डाइस के फंड रेजिंग डिनर में मौजूद हूँ
اور اس وقت میرے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کا فخر فرحان طاہر صاحب، جو کہ اسٹار آف موشن پکچر جس میں آئرن مین، اسٹار ٹریک شامل ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ خاص طور پر یہاں پر اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں شرکت کے لیے آئے ہیں. آئیے فرحان طاہر صاحب سے آج کے فنڈ ریزنگ سے متعلق پوچھتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں بتائیے. میں آپ دیکھیے، میں یہ ڈائس فاؤنڈیشن کے ڈنر میں آیا تھا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن اس لیے کیونکہ یہ میرا فرض ہے. اگر آپ ڈائس فاؤنڈیشن کے بارے میں پتہ کریں تو آپ یہ جانیں گے کہ جو ڈائس فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی یوتھ، پاکستانی بچے، جو پاکستانی لوگ جن کو انوویشن کی ضرورت ہے، ان تک وہ فیسلٹیز پہنچائی جا سکیں so that they can feel confident about what they're doing, whether it's in education, whether it's in art, whether it's in medicine, whether it's in engineering. So that is the mission of it, and I feel that it is not any great gesture on my part or anybody's part to be here. I think it's our responsibility to be here and do something about the plight of Pakistani youth. جی ناظرین، میں ہوں انصار رضوی نمازاد، سفیر پاکستان جیو ٹی وی. اس وقت میں مشیگن میں ڈائس کے پہلے فنڈ ریزنگ ڈنر میں موجود ہوں، اور آج کا یہ ڈنر بہت ہی انتہائی شاندار اور کامیاب ڈنر تھا، جس میں پورے امریکہ بھر سے مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی. اور اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں خاص طور پر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے فاؤنڈنگ وائس چانسلر جناب مسعود حمید خان صاحب، جو کہ خاص طور پر پاکستان سے اس ڈنر میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس وقت میرے ساتھ ہیں. آئیے ان سے ڈائس سے متعلق پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈائس کا جو آج فنکشن ہوا ہے فنڈ ریزنگ، یہ بہت ہی کامیاب فنکشن تھا، اور مجھے امید ہے کہ ڈائس جس طرح کام کر رہی ہے انوویشن کا اور انٹرپرینرشپ کا، وہ پاکستان کا ایک گیم چینجر ہوگا. کیونکہ اگر ڈائس کے ذریعے ہم پاکستان میں 3-4 چیزیں بھی کمرشلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی اوپر جائے گی کہ اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکیں گے، جس میں پانی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، اور پاکستان ایک ترقیاتی نیشن کے اندر جو ہے اس کا شمار ہوگا. جی ہاں، ڈاؤ کے جو یہ ڈائس کے جو ڈائس ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت سارے پاکستان میں چل رہے ہیں، جس کے اندر ایک ہے وہ ڈینٹل میٹیریل بنانے کا پروجیکٹ ہے، پھر کچھ ایکوپمنٹس بنانے کے جس میں اسٹیتھوسکوپ ہے اور آٹوکلیوز ہیں. اسی طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو لانچ کیے ہیں، لیکن ابھی وہ چل رہے ہیں پروجیکٹس. انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت جلد وہ کمپلیٹ ہوں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ کچھ چیزیں پاکستان میں بنا سکیں. ڈاکٹر سہیل حسن، مشیگن کارڈیولوجسٹ. آج ہم ڈائس فاؤنڈیشن کی تقریب میں شامل ہیں، جس میں کہ مختلف شعبوں سے لوگ سارے مشیگن سے اور مشیگن کے باہر سے بھی آئے ہیں اور پاکستان سے بھی اٹینڈ کرنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے کافی فنڈز ریز کیے ہیں ڈائس کی ایکٹیویٹیز کے لیے، تاکہ پاکستان کی ایجادات کو اور پاکستان کی انوویشنز میں پاکستان میں ہی ان کو ڈیولپ کیا جائے. اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حالانکہ ملک سے دور ہیں لوگ، لیکن پھر بھی ملک کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں کہ آپس میں جمع ہو کے کافی فنڈز ریز کریں ہیں تاکہ ہمارے پاکستان میں ڈائس کے کازز کو مدد ملے اور الٹیمیٹلی پاکستان کے ایجادات اور پاکستان کی پروڈکٹس کو آگے بڑھایا جائے. شکریہ. میرا نام ہے ڈاکٹر رانا قمر مسعود. میں کراچی سے آئی ہوں یہاں پہ ڈائس کے فنکشن میں جو انہوں نے فنڈ ریزر ارینج کیا ہے، اور ڈائس کے حوالے سے یہ بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے، اس فاؤنڈیشن نے اتنے پلیٹ فارمز جو کھولے ہیں، اور ان سب میں اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انوویشن کلچر پاکستان میں ڈیولپ ہو. جب میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر تھی، چند مہینے پہلے میں وہاں چھوڑا ہے، تو اس سے پہلے میں نے 3 فنکشنز ڈائس ہیلتھ کے کیے تھے وہاں پہ کراچی میں، اور اس میں اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اور پروجیکٹس بنائے ڈائس ہیلتھ کے حوالے سے.
और अब यहाँ पे जो है जो उन्होंने मेन फंक्शन किया है, इसमें आज जो प्रेजेंटेशन करी है आप लोगों को पता चला होगा कि डाइस टेक्सटाइल भी, एनर्जी भी, वाटर भी और डाइस कैम मीडिया भी सारे प्लेटफॉर्म किया है। और इन सब का जो मकसद है वो ये है कि एक इनोवेशन कल्चर डेवलप हो, पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी, नॉलेज बेस इकॉनमी होगी और उससे न सिर्फ ये कि तरक्की पाकिस्तान की होगी, एक पूरे जो स्टूडेंट्स कल्चर हैं वो उनकी भी पढ़ाई, उनका लेवल, उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और एक प्रोडक्ट जो बनेगी इनोवेशन की, जिससे कि एक सिस्टम पूरा डेवलप होगा पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं अमेरिका में, मैं समझती हूँ उन लोगों ने ये जो फाउंडेशन बनाई है इससे बहुत ज़्यादा उनका पेट्रियाटिज़म पता चलता है कि उनके अंदर है और अल्लाह उनको कामयाबी दे। और हम सब दुआगो हैं और हम सब लोग मिलकर ही काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है उसमें कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ में वो टैलेंट नहीं है जो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हमें उसको बेस्ट यूज़ करने का तरीक़ा यही है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके स्टूडेंट्स उसको बनाएं, ईजाद करें, एक इनोवेशन कल्चर हो और दूसरे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो फंड रेजिंग करके उनकी हेल्प करके उन प्रोजेक्ट्स को, इनोवेशंस को कंप्लीट करें और इवेंचुअली जो फ़ायदा है सबकी विन विन सिचुएशन होगी। और इसके लिए हम इसी कॉज के लिए हम अभी भी हैं और इसी वजह से मैं और डॉक्टर मसूद हमीद ख़ान जो फाउंडिंग वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी के हैं, हम लोग आए हैं क्योंकि हमने पिछले 4 साल से डाइस के जो फंक्शंस करे थे डाउ के प्लेटफॉर्म से और अदरवाइज़ भी हम सारा उनके साथ हैं हर स्टेज पे उनकी हेल्प करने के लिए। और हमारी सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक कामयाबी दे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुरैया रशीद है। वी आर हियर इन डिट्रॉइट। डिट्रॉइट में आज हमारा डाइस फाउंडेशन का पहला फंड रेजिंग है and we are so excited to be here. There's a lot of interest. I have a special interest in, I chair DICE Youth. Pakistan ki 60% population is really youth, people under 25. And what we are trying to ask them to think outside of the box. Think about how we can improve our country, how we can bring our country to the next level of excellence. And hopefully people will hear about it from their heart and will help us to do to the next step. Thank you so much. My name is Saad Ilahi. I'm part of DICE Foundation. I chair DICE Automotive team of DICE Foundation. Today we had our first annual fundraising event here in Dearborn, Michigan. It was a very successful event. We had very good turnout and we had some guests from Pakistan as well. Dr. Masood Hamid, the founding Vice Chancellor of Dow University was here. Farhan Tahir from California, he came to our event today. And Rubina Ashraf, very well known artist in Pakistan, was also here with us for this event. They came specifically for this event to support us in our cause to give back to Pakistan. One of the things that we're trying to do here is to mobilize the expatriate community and focus on giving back to Pakistan and make Pakistan an innovative nation and have Pakistan achieve prosperity through innovation. That's our goal. We have a lot of support in Pakistan as well. We work with a lot of universities where we hold innovation events on an annual basis. And the purpose of these innovation events is to have people, students especially, come up with ideas, innovative ideas, and then help those students take those ideas from concept to product through funding from the industry and from potential investors. And again, our goal here is to make Pakistan a prosperous nation through innovation and mobilize the expatriate community to give back to Pakistan through this forum, DICE Foundation.
Assalamu alaikum. My name is Halima Ahmed and I'm from Troy, Michigan. I'm here tonight for the DICE fundraiser. I work at Ford Motor Company and I'm so excited for all the innovation, all the research, and our kids in Pakistan definitely deserve an opportunity. I'm so excited. My parents came here in the mid-70s, so I hope that children in Pakistan and everyone in the world obviously gets the same opportunities. We're very fortunate and we're here to support DICE. So inshallah, may other generations get the same opportunity for innovation, research, and engineering. Thank you so much. Hi everyone, we just had a very, very exciting night. It's the first annual DICE fundraiser held in Detroit, Michigan. It was a big success. I wanted to say thank you to everybody for coming all the way from Pakistan and California, other parts of the United States of America. We had Dr. Hamid Masood Khan here, who is the VC of Dow University of Health Sciences. We were blessed to have Farhan Tahir here, who is the star of Iron Man, Star Trek, Elysium, Jinn, and many, many other movies, as well as having Rubina Ashraf that everybody knows. So we give a big thanks to everyone that showed up to support DICE Foundation. We give a big thanks to everybody who donated to DICE Foundation, and it's a very, very worthy cause of trying to bring opportunity to people that may need opportunity the way we've been given opportunity growing up in our lives. So I want to thank you, everybody, and it was a great, exciting evening and a lot of fun. And here's a shout out to GeoTV. Thank you so much. My name is Iman Qureshi. I'm a volunteer at the DICE fundraising dinner. And I'm Amani Ahmed, and I'm also a volunteer. And we're really excited to be here. This is such a great event. There are people from all over, not just the country, but the globe, and we have guests coming from Pakistan, and it's so exciting to have everybody come together and support this nation of Pakistan. And I'm really proud of my dad, who founded DICE, for all the hard work he's put in, and it's really great to see it all come to fruition, and inshallah it'll lead to lots of better things in the future. And this fundraiser really brings joy to my heart. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर अहमद है. मैं डाइस फाउंडेशन ऑटोमोटिव टीम का मेंबर हूँ. Today is the first DICE fundraising event in Michigan, and it is a very successful and sold out event. And in this event we have a lot of talented people from different engineering discipline and the medical discipline to recognize and encourage the efforts that the DICE team put together. We have very talented actors from Hollywood. Farhan Tahir joined us, and the Rubina Ashraf. We are moving forward to have the nice growth based on the talent of Pakistan and establish a strong Pakistan based on the DICE Foundation talent. जी नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिजवी नुमादा सफ़ीर पाकिस्तान GeoTV इस वक्त मिशिगन में डाइस फाउंडेशन के फंडरेजिंग डिनर में मौजूद हूँ. और ये डाइस फाउंडेशन का USA में पहला फंडरेजिंग डिनर था जो कि बहुत ही कामयाब गया. इस फंडरेजिंग डिनर में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो जनाब फैसल नियाज तिरमिजी, डॉक्टर मसूद हमीद खान, डॉक्टर हसन, रुबीना अशरफ, फरहान ताहिर जो कि एनिमेशन मूवी के स्टार हैं, उन लोगों ने शिरकत की. इसके अलावा पूरे अमेरिका भर से बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर मौजूदीन ने शिरकत की. अंसार रिजवी सफ़ीर पाकिस्तान GeoTV.